है, हमारे जो स्पीकर्स हैं जो आपको अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, उनको हम पुष्प गुच्छ बुके देकर स्वागत करेंगे। अकबर भाई, तरुण भाई का और आनंद जी का स्वागत करें। और आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये आप सभी के लिए आते हैं, आपका जो संडे मनाने और इनका भी संडे मनाने, एक दूसरे से संडे और एक अच्छी गुफ्तगू हो और एक डेवलपमेंट का, सबका विकास हो, उसके लिए। इसलिए अकबर भाई और हम लोगों का यही मंशा रहता है कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो मुस्कान आनी चाहिए जोरदार तालियों के साथ में। और आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा, अभी आपने जैसा बताया कि काफ़ी सारे विषय आपको एजुकेट और अवेयर होने का मौका मिलेगा यहाँ पे, जैसा अकबर भाई ने बताया है। बहुत सारे दूसरे लोग स्पीकर पे आएंगे। आशीष भाई का भी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या इनिशिएटिव लिया है रीडेवलपमेंट पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे, वो भी बताएंगे आशीष भाई। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए चाहेंगे कि पीएमसी का जो पार्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और गवर्नमेंट सर्टिफाई है अकबर जीवानी साहब। रोल ऑफ पीएमसी किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है इन रीडेवलपमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, फिजिबिलिटी एंड वेरियस स्कीम्स। महाड़ा लैंड पे बात करें हम 33(5) पे, या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी 33(7) भी 33(7) पर हाईलाइट करेंगे अपनी पीपीटी के जरिए। प्लीज वेलकम अकबर जीवानी साहब। हेलो फ्रेंड्स, मैं AI पावर्ड PMC अकबर जीवानी। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन सुनने के लिए भी अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई ये सब करना है। मेरा 223rd एपिसोड ऑफ प्रभु की खास बात में, एंड मैं आज आपका होस्ट रमेश प्रभु यार। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हर एक का हो एक सपना, एक घर हो अपना। तो आज अपना घर तो है, लेकिन कितना सुरक्षित है, क्या स्टेज पे है, डॉक्यूमेंटेशन उसका क्या है, उसका ट्रांसफर हुआ कि नहीं, क्या एफिडेविट पे हुआ, जैसे कभी अभय योजना भी था, was to regularize the house. So that is very important. It is not just buying, selling, taking possession and it's big your home. So we discuss on that. Today's participants ka ratio, I'll just tell you, of all the registration, we have received more. So there are office bearers of housing societies. Then that is around 20%. Then committee members also there, 21%. We have professionals also who are around 15%, and 43% are the members of the housing society. So it is a good mix variation of people who are present today. There are professionals also, maybe I met couple of architects also and PMCs also. So it is a win-win situation for everyone. Everyone needs to meet each other, keep talking to each other. So basically agenda my will be role of PMC, feasibility of various schemes, where you fit into. What are the schemes which normally a builder may not tell you, but he may tell you and he may not tell you, but you should know, important for you to understand. Okay, where do you stand? What are you eligible? How do you stand where? Okay, and then we'll be giving you highlight on construction technology, where we stand in construction industry, like how in banks there are distribution of the UPI आ गया, GPay आ गया, जो 4 दिन में हम चेक पहला लेते थे, आज 1 सेकंड में हमको पेमेंट मिल जाता है, and then we'll take it further. So basically our role of a project management consultant is basically first to ascertain that what is the title of your property, whether the society's name is there on the property card or no, or whether it is the MADA land. So MADA is the owner. That has to be ascertained. If the property card is not there on the society, you have to go through conveyance and get it first. That is the first step if you ever think of going for redevelopment. So that is the role to understand कि where do you stand in the records, government record, कि आपका सोसाइटी का नाम है कि नहीं है उस पर, और होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. तो रोल पीएमसी देन हमको बताता है कि आपके प्लॉट का सिचुएशन किधर है, लोकेशन किधर है, कौन से जोन में है, रोड विथ कितना है. रोड विथ के हिसाब से भी तुमको एफएसआई मिलता है. मेरे प्राइवेट लैंड है, साउथ बॉम्बे में है कि सबर्ब्स में है, because the same policy is different for South Bombay
and for north. So to understand that, it is very important how you get. If people are very beneficial if they are on Mahada land, because Mahada का layout बड़ा होता है, तो they share the Mahada का inland roads जो रहता है, उसका भी FSI मिलता है. जैसे कि Bandra reclamation में है, तो you get FSI up to 11. Basic FSI is 1. बट वो टिट बिट एरिया बोलते हैं, उनका लेआउट होता है, उनका रोड का भी एफएसआई होता है. सिमिलरली बाजू में प्राइवेट लैंड है तो उसको बेसिक इज 1.3 और वो टीडीआर मिलके उसको 3 या 4 है. सिमिलरली आपका 9 से 12 मीटर का रोड है तो आपको 2 एफएसआई मिलेगा, जो पहले वो भी नहीं था. सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एलिजिबल टू, देन यू बिकम स्ट्रॉन्गर बाय व्हाट आर वी एबल टू गेट इट. सो दैट इज द सेंस यू मेक अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट. In that you get to know what is the present status, how much you are using, whether you have utilized 1 FSI, you have utilized 1.5 or you have utilized 2, and what are you eligible if you go for redevelopment. तो अक्सर वो होता है कि builder is offering 25%, किधर 35% है, किधर 50% है, किधर 60% है. So अक्सर पब्लिक बोलते हैं वो 70% देता है, तुम 35 क्यों देता है. तो there are various factors on which it is derived at. Thirdly, it is the once that process is there, so there is a process we have to follow, which will come down. Okay, what is the society has to follow the certain procedure and process, which is called under 79A guidelines, which is अक्सर उसको follow होता नहीं है, या उसका mismatch होता है, या तो उसका mismanage होता है. तो as a PMC, he gives you that. Then there is planning, then there is tendering, where you call for builders or a tender. Then there is a appointment of a legal person who will take care of the legalities of the whole transaction and all that. And it is a process from start to scratch, from scratch to end. Right, you coming back, a PMC role is there to certify certain things, what is happening, how it is happening, what are the challenges. Then only, that is the main importance role of a PMC. So moving towards safer homes should be a theme. Where you are today, you are moving towards more safer home, right? So feasibility report is the first thing which a PMC has to give you. Then step-by-step procedure as per government GR for guidelines on 79A. I'll come to this also in the following slides. Then there is a tendering and the section where the builder is appointed. So there are various checklists you have to see before appointing a builder. Basically, whether what is his past performance, क्या उसने कितना सोसाइटी लिया है, उसका कन्विंस करके दिया है कि नहीं, कितना सोसाइटी है, उसका ओसी लिया है कि नहीं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट. देयर आर स्टिल 50,000 बिल्डिंग्स इन बॉम्बे हु डोंट हैव ओसी, बिकॉज पीपल आर डेस्परेट टू गेट पोजेशन. बिल्डर बोला है ले लो, ओसी आया नहीं आया, घर में पहला घुसो. बट टिल नाउ दे हैव टू सफर इन टर्म्स ऑफ वाटर चार्जेस आर डबल, इलेक्ट्रिसिटी इज डबल. So that has to be the third, and the fourth is fundraising. So it is a wide option. Funding कौन करेगा, builder के पास fund है कि नहीं. If you are going for self redevelopment, how you will get the funding. So our approach of today's session is to give you solutions, not only just give you information, because we are living in information. आज internet है, Google है, कोई भी कुछ भी Google पे डालो आपको जवाब तुरंत मिलता है. You don't need someone to tell you. But we are not in an information, we are transformed to a knowledge society. So how do you assimilate all the knowledge, all the information, assimilate it, how to use, when to use, to what issue to use and where to use. That is what is important, where you need a professional input to tell you and guide you in that. Then there are legal services also. That also you will hear Tarun Gia ji in terms of what are the legal processes, what are the laws. Income tax लगेगा कि नहीं, GST कौन भरेगा, that he will highlight and explain to us. And execution of the total, that is when you go out, when the plans are passed, buildings are demolished, and then when you go out, so during that period till you come back, the role of the PMC is to see that the construction is done properly. बिल्डर उसमें रेती में सीमेंट मिलाता है कि सीमेंट में रेती मिलाता है, वो सब जानना जरूरी है. बट देयर इज टेक्नोलॉजी ऑल्सो नाउ विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू ऑल्सो कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन विच आई विल फर्दर हाईलाइट यू. सो इट इज एज अ PMC इज नॉट अ वन मैन शो, इट इज अ होल टीम. In terms of legal services are there, architects are there who do the planning, who show you the planning, and every time you have to insist for information, for knowledge,
कि आई वॉन्ट दिस, मैं बाहर जाऊंगा तो वापस कौन से फ्लोर पे आऊंगा, यू शुड नो व्हाट इज द प्लान, क्योंकि प्लान बनता कुछ है, दिखा कुछ है, और फिर फाइनली तुमको कुछ देने में आता है तो इट इज बाय दैट टाइम इट इज टू लेट. सो those conditions have to be understood and adhered to, not just jump. बिल्डर आया वो सब करेगा, जान छुड़ाओ, पर तुम तुम्हारा घर रिस्क लेके जान नहीं छुड़ा सकते. दैट इज द होल आइडिया. समझो, इट इज नॉट इन अ हरी, बट यू हैव टू गेट दैट नॉलेज, इंफॉर्मेशन. दैट इज माई पर्पस ऑफ दैट. सो आर्किटेक्ट्स आर देयर, मार्केटिंग इज देयर, फाइनेंशियल इश्यूज आर आल्सो देयर. सो दिस इज द स्कोप ऑफ वर्किंग. प्लानिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्राम्स आर मेड, रेरा कम्स इनटू द पिक्चर. रेरा comes into the picture. RERA is the body which was made in 2017 to bring some discipline into the builders, and to some extent they have been successful also, right? So legal aspects are there, comparative assessment is to be made. एक बिल्डर आया, दो बिल्डर आया, who will study? PMC will give you a comparative chart. डिसीजन आपका होना चाहिए कि किसी को अपॉइंट करे, तो बेस्ड ऑन दैट वी विल गिव यू. उसके बैंक बैलेंस में पैसा है या नहीं वो हम बताएंगे आपको. वो कर सकता है कि नहीं वो बता सकते हैं, उसका इंटेंशन क्या है वो बता सकते हैं. तो पास्ट ट्रेंड्स उनका हमें बता सकता है कि वो क्या हद तक जा सकता है, क्या नहीं कर सकता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. आई विल गिव यू रिसेंट एग्जाम्पल. बैंड्रा का है, बैंड्रा तालाब के पास, January, builder was appointed in the presence of everyone, in the presence of the registrar. With the commercial shops on ground floor were promised ground floor. After 6 months, he's saying, I'll give you on first floor. So is that acceptable? No. जिसने जिंदगी भर 40 साल दुकान नीचे रखा उसको बोलेगा पहला माला जाएगा, नहीं जाएगा. So there are ideas are there कि तुमने उसको अपॉइंट करने के पहला ये सब लिखा पढ़ी होनी चाहिए. इट शुड बी इन राइटिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, वेयर आर यू गोइंग टू गेट, हाउ आर यू गोइंग टू गेट. विल गो थ्रू. देयर आर 72 क्वेश्चंस you should ask a builder. Okay. So this is a structure, and then Rajesh Matre, who's associated with us. He is also an ex-KDMC professionals. The idea is professional input is also required and their experience is also required. Tarun Giyaji, we are fortunate he is here with us, and he is going to talk on the legal process, real estate laws and the documentation part. And we concentrate on also lands which are on BMC and MADA. There is a safety in doing MADA BMC land because the title issue is not there. Suddenly कोई बीच में से आएगा नहीं कि मैं ओनर हूँ, या तो मेरे बाप जगह की जगह थी, या तो मैं केयर टेकर हूँ. So these are the issues and safety measures we do see. But the problem stage, builder selection and negotiation is time consuming. The best offer providing developers will not necessarily be a well financed and timely executed. Allegations of corrupt practices are always there between managing committee and members. Since I had last program on 11th August till now, the issue coming to me is that managing committee is not responding. मैनेजिंग कमेटी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, वो खुद सिलेक्ट करती है, खुद अपना पीएमसी लाए, खुद अपना बिल्डर लाए. दिस इज द बर्निंग इश्यू. बिफोर एनी सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट कैन हैपन, दिस इज द बर्निंग इश्यू. वी वुड ट्राई हाउ फार वी कैन रिजॉल्व दैट. तो सोल्यूशन इज पास ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन, आस्क फॉर क्वेश्चंस, आस्क फॉर क्वेरीज, गिव इंफॉर्मेशन. एक पेपर मांगता है उसको 4 दो. So till that doesn't happen, continuous flow of information, continuous flow of getting the details, who is the architect, architect ने क्या बनाया है, you should get equal chance to, consent letter भी रहता है, you should have an opportunity to ask your own consultants or own legal person. DA भी आता है तो बोलते हैं 4 दिन में ओके करो, तो 80 page document is not possible that way. So these are the issues which come down. So we have to see these are the trending issues. The base is how a society unitedly, where
certain societies may I have observed like the managing committee behaves that they are the landlords and everyone is a tenant. So that should not happen, and that is how is the need of the hour. These are what past are there. 7,000 projects are still not working or they are stalled for want of documentation of our funds. So somewhere something is wrong. We have to identify that. To some extent we will identify today and let you know. But one of the key elements which we will understand today is proper documentation. Every challenge should be recorded, every challenge should be understood, and every challenge should have a resolution embedded in your document. So role of a PMC is carry out structural audit, whether your building is desperate for a repair or it can go for redevelopment, whether you can go for redevelopment without repair, how much time it will take or should you get. So that is you have to understand where you stay. कि जो घर में आप रहते हो वो अगर 2-3 साल रीडेवलपमेंट को लगता है तो इज इट सेफ टू से अभी रीडेवलपमेंट में जाना है, अभी रिपेयर क्यों करे? लेकिन वो छत पे आप तो 50% अपनी लाइफ जी रहे हो. आप 9 से 10 बजे सुबह निकलते हो, शाम को 6, 7, 8 बजे आते हो, तो रात के 12 घंटे तो आप घर में हो. तो जो घर में आप 50% ऑफ योर लाइफ यू आर स्पेंडिंग, हाउ सेफ इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू टेक दैट करेक्टिव मेजर्स. रीडेवलपमेंट होगा, हम जिंदा रहेंगे तो. अगर हम ये चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें आगे सोचना भारी पड़ जाता है. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स. अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट विल ऑल्सो टेल यू, अ रिपेयर विल ऑल्सो देयर, द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट भी आपको बोलेगा. Then comes the tendering, which I just explained. Comparative charts बनता है, finalization होता है, and then we proceed. Further, finalization of building plans. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया बैंड्रा स्टेशन की प्रॉपर्टी का. Plans were not made, plans were not shown, plans were not approved. बिल्डर को अपॉइंट कर दिया. तो देन इट इज इसके एक बिल्डर को अपॉइंट करने के लिए पूरा प्रोसीजर जाता है. तो देर कोर्ट के ऑर्डर सब बोलते हैं majority wins, minority has to go by majority. But there are orders from court recently where the court says minority is not safeguarded. There was a clause of bank guarantee has not given, so I will support the minority also. So with that trend जो होता है कि 51% कंसेंट मिला, हम जंग जीत गए, आ गया, जिसको जो करना है करो, is not the right attitude. It is understanding everyone, क्योंकि हर एक ने पैसा देके घर लिया है, फ्री में तो घर आया नहीं है. तो they are equally owner and responsible and they have to be respected and honored. So these are the issues: possession, occupation. There will be issues in a redevelopment. There is a dispute in the house in terms of title. The parents have expired, घर उनके नाम पे है. The 4 भाई है, 2 भाई रहते, साथ में 2 बार रहते. सो बात आएगा डिस्प्यूट का कि उसमें मेरा भी हक लगे कि भले मैं बाहर रहता हूँ. बट रीडेवलपमेंट शुड नॉट बी स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट. सो द इश्यूज वॉज वेरी सिंपल. जो आपको पोजेशन देगा एट द टाइम ऑफ वेकेटिंग, यू विल गिव हिम द पोजेशन ऑफ द फ्लैट. टाइटल दे कैन सॉल्व वेन एवर दे वॉन्ट, बट दिस इज रेंट भी जो खाली करके दे रहा है उसको देंगे. सो द स्टेप्स वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेक इट फॉरवर्ड कि हाउ इट कैन बी सॉल्व. दूसरा आएगा, मैं अभी पहले माले पे हूँ, मुझे पहले माले मिलेगा, 4 माले मिलेगा, 6 माले मिलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप योर फुट डाउन कि आई नीड एवरी इंफॉर्मेशन. You are free to consult your own advocates. You should get that time. कि समझो, हमें समझना है, हम एक घर छोड़ के दूसरे घर के ख्वाब में जाते हैं, लेकिन you have to be well informed, well equipped and well aware. So basically I'll just explain to you. ये है माड़ा का layout. Okay, so this is the plot area of a society which gives you this, and this is the building area. अभी माड़ा का जो लेआउट में है तो उनका समझो इसमें 1400 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट है. बिल्डिंग का बिल्टअप इज 900 मीटर्स. ओके, सो इन अ माड़ा लेआउट 1400 meters you will get 3 FSI. But in a Mada layout of 25,000 square meters, there are internal roads. Okay, so that belongs to Mada. So he said, "Uska bhi 3 FSI. I have to distribute
with all the members. So you get a pro rata area from incentive. Let's say this particular society, इनका flat area is 56 meters. उनको pro rata additional मिलता है 60 meters, equal to that size, plus 3 FSI. So it is a situation you have to understand, what do I get. So how do you understand this area of the plot? What is floor space index? FSI is called ratio of area of the floor to the area of the plot. So जैसे कि माड़ा बोलती है 800 मीटर का प्लॉट है, 1000 मीटर का प्लॉट है, तो 1 FSI हुआ तो मुझे 1000 मीटर मिलना है, 1.5 होगा तो 1500 मिलेगा, 4 FSI होगा तो मुझे 4000 बांधने को मिलेगा. एंड देन कम्स के अगर 4000 में आपको कितना देना है, बिल्डर को कितना मिलेगा, ताकि इट बिकम्स अ वायबल प्रोजेक्ट फॉर यू. सो DCR 33.5, 33.7, 33.7A, 33.9. 33.5 is where societies are under MHADA layout. So they have a set of guidelines. They have a FSI of 3 plus 35% fungible होता है, so it crosses around 4.2. So that you should basic understand कि 4 FSI minimum मिलेगा, pro rata add होगा तो 5 FSI भी होगा. So 4 को कांदिवली एरिया 6 FSI के नीचे कुछ भी नहीं है. So you should understand that कि when you are getting a presentation, you have to understand कि pro rata क्या है, ये पूछना जब भी आपके पास proposal आता है. And if you are मारा, what is the pro rata FSI I am getting. 33.7 is sales building, private land हो सकता है और गवर्नमेंट लैंड हो सकता है, where the building is managed by MHADA. पहले क्या था कि लैंडलॉर्ड सिस्टम था, लैंडलॉर्ड बिल्डिंग होता था, लैंडलॉर्ड 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपये में बिल्डिंग आपका मेंटेन नहीं कर सकता आज की तरह. सो व्हाट हैपेंस, लैंडलॉर्ड टेल्स MHADA भाई तू संभाल उसको, तू उसको रिपेयर कर और टेक केयर ऑफ इट, उसके बदले यू हैव टू पे सेस विच इज वेरी नॉमिनल कंपेयर टू what is the cost of the. So they have a different situation. Now this 33.7 is different for South Mumbai and it is different worrisome for North Westerns. There it is, जैसे बॉम्बे में 1000 मीटर के प्लॉट में वॉल टू वॉल 5 माला है, so 5 FSI तो ऑलरेडी they are using. So how do they get? Policy 1.33 plus TDR बोलते हैं. So उधर पॉलिसी ऐसा है कि whatever you propose to give to the tenant, you get up to 80, 85, 90% of that area to build. So then only it becomes viable. जैसे कि आपका 500 है, वो आपको 700 देता है बिल्डर, तो 700 का 90% उसको बांधने को मिलता है. But that is not there in the suburbs, which we have represented, made representation also. कि why that difference? जैसे NA tax था, which अभी finally got abolished, साउथ में नहीं था, beyond माइंड बैंड्रा पूरा वो NA tax was there. So there is somewhere something is not happening properly, which we have to protest. So similarly non-cess building है, which is there, tenanted buildings है, but they are not a non-cess, they are non-cess building. So उनके लिए भी लिमिटेड एक FSI है, बट वही साउथ में यू गो ऑन इंसेंटिव बेसिस, इट इज कॉल्ड इंसेंटिव FSI, जिधर सीमा का कोई है ही नहीं है, FSI की कोई हद ही नहीं है, 8, 10, 12, 15 जो भी है, यू कैन सी इन साउथ बॉम्बे इट हैज गॉन टू दैट ऑल्सो. करंटली आई एम डूइंग वन प्रोजेक्ट इन मसगांव हसनाबाद सोसाइटी, 8.5 FSI. ओके, सो ऐसा है अपनी परिस्थिति आज की तारीख में. तो जब भी इलेक्शन में आपके पास कोई आवे इलेक्शन वोट लेने, तो ये सवाल पूछना कि हमको ऐसा क्यों बर्ताव करते हो. 33.9 इज व्हाट इज अ क्लस्टर. ओके, 33.9 इज अ क्लस्टर. क्लस्टर इज वेयर अ मिनिमम साइज ऑफ अ प्लॉट. साउथ बॉम्बे इट इज कॉल्ड आइलैंड सिटी. इट इज 4000 मीटर के ऊपर का प्लॉट हुआ तो आपको क्लस्टर होता है. इन सबर्ब्स वेस्टर्न इफ इट इज अबव 6000 मीटर्स, इधर भी तफावत है, सबर्ब्स में 6000 मीटर्स है तो आप क्लस्टर में आते हो. तो क्लस्टर में यू गेट 1 FSI एक्स्ट्रा. जैसे माड़ा का प्लॉट भी अगर 4000 मीटर के ऊपर हुआ और 6000 मीटर सबर्ब्स में, तो 3 FSI है, तो गेटिंग 1 FSI एक्स्ट्रा. एंड देयर आर वेरियस एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ premiums and all that. So there are, it's a vast field.
in terms of so many schemes are there, we get lost. Where do we stand? Then इतना बहुत समझने के बाद आता है कि तुम्हारा रोड विथ कितना है, 9 मीटर है, 12 मीटर है, 18 मीटर है. Okay, so there are challenges, lot of there, where we have put it up suggestions, but we are working on it. So 33.5 direct flats sale by MADA है. MADA has given land on lease. तो MADA में भी तफावत है, हमने आपको लीज पे दिया है, हमने आपको डायरेक्ट सेल किया है या क्या किया है. Because in MADA the biggest challenge is taking conveyance of your building. If you want to go for redevelopment and you are in a MADA plot, you have to take conveyance of your building and you get a lease of the abutment land. Conveyance in short is that you get the ownership of the building. So tomorrow if anything happens to the building, then your right goes to some extent, but this is how it is explained. So now people pay premiums also, otherwise you have to give certain share to MADA. So now that is also waived off. So as I just said, road width के हिसाब से either you get 3 FSI, if you are abutting 18.3 meters road आपका बड़ा है, so then you get 4 FSI. This is how pro rata is calculated. Okay, this is a total 10,000 square meter का layout है. 10,000 square meter में there is a reservation. Okay. तो 1000 स्क्वायर मीटर का रिजर्वेशन है, तो प्लॉट हो गया 9000. अभी उसमें रिजर्वेशन जो आप देख रहे हैं, दिस ऑल इज देयर इज 4000. सो योर नेट प्लॉट हैज बिकम 5000 स्क्वायर मीटर्स. ओके, सो 4000 स्क्वायर मीटर्स का इधर एफएसआई 3, तो 12000 मीटर, और ये पूरा लेआउट में देयर आर 300 टेनेंट्स. सो डिवाइड बाय दैट यू गेट 40. So each flat will get 400 square foot extra FSI. That is called pro rata. Okay, I will share this screen, don't worry, so you can understand it better. Okay, so this is how it is all calculated. These are the road FSIs. This all iska bhi FSI is given to all. So coming to housing societies, especially in the suburbs and Bandra and all that, it is called 33.7B. 33.7B. उसमें भी एक इंसेंटिव है कि either you get 100 square meters extra or 15% of the area whichever is more, but that is adjusted against to your TDR also. अभी what is going in many societies are from Bandra also, I see suburbs also. So there are clubbing of 6 schemes. 33.7B is being clubbed with 33.11. It is called PTC. Okay, PTC कैसा है, किसी ने ओशीवरा में स्लम का प्रोजेक्ट बनाया, उसने रिहैब कंपोनेंट बना दिया, सेलेबल नहीं बनाया, तो सेलेबल का जनरेट होता है TDR सर्टिफिकेट which he can sell in Bandra. So that is how, suppose in a normal Bandra में अगर 18 meters का रोड है, तो you are getting 2.4 FSI plus PTC 1.5, it comes to 3.9 plus 35 fungible, तो 5.4 FSI. Bandstand का I can show you the plans which are going on or past also on 5.4. So अगर कोई बोलता है आपको बिल्डर के आपको 3 FSI मिलेगा, 3.5 मिलेगा, तो you can verify this way. Okay, you can go to Auto DCR MCGM website, आपका प्लॉट नंबर डालो और आजू बाजू का प्लॉट नंबर डालो, you will get the plan of that particular building and you will get to understand. So everything is available, it is just you have to navigate and go there. So what is the future of redevelopment of housing societies in Mumbai? So current situation is aging infrastructure, which to some extent it is being initiated by the government in terms of the coastal roads and metro and all. Good efforts have been made and good relief is released. Like you can imagine from Nariman Point to Bandra in 15 minutes, which was not possible earlier. So infrastructure government is taking care of. Increased land values, so it is difficult to retain yourself in Mumbai. You have to move towards further down. But it gives you a quality of life, improved quality of life. In terms of you get connected to the nature through recreation, gardens and various issues and all. Government incentives are also there, which are increasing. Like
MADA has a very good policy where if you are going for cluster, so even if you have a house of 225 square feet, you are eligible for minimum 480, 115%. Currently, I am the PMC of one of Mumbai's largest cluster redevelopment in Kandivali. It is a MADA layout, 115 square meters. So minimum they are getting, they have a 225 square feet, all 3,500 flats. One size 225, they are minimum getting 480. So this is how government is all out, especially MADA is always people friendly in terms of giving FSI increase. Okay. Urban renewal projects play a crucial role which is happening. But what are the challenges? Relocation and rehabilitation. मैं बांद्रा में रहता हूँ, मेरा रीडेवलपमेंट होगा, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बांद्रा में ही रहूंगा, तो बांद्रा में मुझे इतने में फ्लैट मिलेगा, इतने मुझे रेंट मांगता है, जो वो सोचना भी गलत नहीं है. But this is one of the challenges in relocation rehabilitation. Funding, securing adequate funding for redevelopment projects can be a challenge. Housing societies often need to raise substantial capital to cover the costs. So to some extent today we are going to solve that problem, Maharashtra State Cooperative Bank, and community consensus has to be there. As I insist, no project, no redevelopment will ever happen unless that difference is there, communication is not there, information is not passed on, it cannot move. Ultimately everyone lands in the deputy registrar's office for their complaints. So it's concrete, money is flowing into Indian reality. So that is a reality. Foreign funds are coming, they are putting money, you can see projects are announced, projects are given by government, and this is how is the situation of but the common man, मेरे लिए क्या है उसमें, दुनिया भर का पैसा आने दो, दुनिया भर का प्रोजेक्ट्स आने दो, लेकिन मैं मेरी बिल्डिंग से जुड़ा हूँ, उसका क्या, हाउ सेफ है, मुझे क्या मिलना है, उससे मुझे क्या फायदा होना है, लेकिन मैं फिर भी इधर उलझा हुआ हूँ, मेरी मैनेजिंग कमेटी से लड़ते लड़ते मेरे को समझने नहीं आता है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो ये सब किस काम का. ओके तो उसका है कि हम अगर बिल्डर अपॉइंट करते हैं तो हमें क्या क्या पूछना चाहिए. सो 72 क्वेश्चंस विल टेक टाइम, बट बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ यू ऑल. सो बट बेसिक स्मॉल क्वेश्चंस आई विल टेक इट इन 1 minute. दिस हाउ मच एक्स्ट्रा एरिया आई विल गेट, व्हाट आर द हिडन एक्सपेंसेस, जीएसटी आपको लगेगा कि मुझे लगेगा, क्योंकि हम पोजेशन लेंगे तभी बिल्डर बोलेगा जीएसटी भरो, तो डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं वो तरुण गिया जी आपको समझाएंगे. तो देयर आर क्वेश्चंस, हु विल पे द रजिस्ट्रेशन फीस, हाउ मच एरिया आई एम गोइंग टू गेट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, विल द सोसाइटी हैव अ सेपरेट ऑफिस, व्हाट आर द एडिशनल एमिनिटीज दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय बिल्डर टू ईच इंडिविजुअल फ्लैट परचेज. ओके, हु विल कीप कंट्रोल ऑफ द कॉमन एमिनिटीज, by what time will the building be constructed, please explain the bar chart, the timelines, कितना टाइम लगेगा, किसको क्या लगेगा, everyone is answerable, the builder is also answerable. तो ये सब स्क्रूटिनी होने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि मुझे ये बिल्डर चाहिए या नहीं चाहिए. What will be the number of story buildings which will be constructed, how many buildings will be constructed, if a person wants additional area, how will it be accommodated, मुझे एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, मुझे क्या भाव लगाएगा, कैसा लगेगा, उसका एडिशनल का स्टैम्प ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा मुझे, विल देयर बी 3-phase मीटर इन माय फ्लैट और नो, इफ आई एम गेटिंग बिगर फ्लैट्स, मोर एसीज, तो तुम 1 meter, यू सी दीज आर स्मॉल थिंग्स विच में लुक्स वेरी स्मॉल बट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो हमने थोड़ा बहुत सोच समझ के लगाया है, नॉट टू डिस्करेज फॉर अ बिल्डर टू कम इन, बट टू क्लैरिफाई ऑल दिस, कि भाई ये क्लैरिफिकेशन है, ये सब सुनो, ये समझो, ये खर्चा है, उसके बाद आप 5% कम भी एरिया देंगे तो हम लेंगे, बट वी विल बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट. व्हाट आर द जीएसटी इम्प्लीकेशंस, सो आवर स्लीपिंग पार्टनर इज ऑलवेज विथ अस, तो कुछ भी करो मेरा 18% खुश है मेरे लिए, तुम लड़ो झगड़ो करो कुछ भी करो, मेरा जीएसटी है, तो वी हैव टू ओबे दैट, एक्सेप्ट दैट. सत्ता के सामने हम कहां पर आगे जाएंगे. व्हाट आर द इनकम टैक्स एप्लीकेशन, आई मस्ट से तरुण गिया जी वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ ऑर्डर
where there is no income tax in redevelopment at the time when he got that order. Further उसके बाद क्या होगा वो हमको समझाएंगे. What is the best tax planning approach? What will be the likely loan rate? What will be the कि मेरा फ्लैट तो लोन पे है तो एनओसी मुझे बैंक से लाना है नहीं, तो नहीं लाना है. आपको बिल्डर अगर ट्रिपल अग्रीमेंट करेगा PAAA वो आपको वापस जमा करना है और कुछ करना नहीं है. What will be, which are the banks with which projects will be empaneled? Approximately how much loan can a flat purchaser expect? Society should be able to terminate the development agreement if there is substantial delay by the building as regards. This is the most crucial point. पर वो सब लिखेला होगा, डॉक्यूमेंट हुआ होगा कि तू ये नहीं करेगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा और इसका सोल्यूशन ये आएगा. तो quite some extent solutions are embedded in a document before going to the court. That is the whole idea. How do we ensure that the project does not get delayed due to loan taken by a member from the bank? So उसका solution court का order है. Just do the PAAA agreement and you submit it to the bank. What is the importance of title clearance certificate before undertaking redevelopment? Most important. Title है कि नहीं मुझे कन्वेंस नहीं है, वो बिल्डर करके देगा ना हमको क्यों करना है. फिर वो बिल्डर 1 साल लगाएगा 1.5 साल लगाएगा, तुम्हारा टाइटल ही क्लियर नहीं होगा. उसने प्रोजेक्ट लेके बैठ गया, आपके साथ DA किया और बैठ गया, फिर आप उसको फॉलो अप करते रहो. What are the documents that have to be given at the time of obtaining probate letter of succession is a membership issue, which is also very hot and crucial between the managing committee and members, which in the question answer we'll address to. Okay, how they are being troubled or because of less knowledge or no knowledge, or they feel they have all the knowledge. Should members file nomination form when building is going for redevelopment? So these are the questions which you have to understand and take it. Now I'll come to the 79A guidelines. Okay, what are the key 10 important points on 79A guidelines? Because the trouble starts with that only. 79A is as per MCS Act, you have to obey, and if you don't obey, if you violate, the deputy register can dismiss that committee also, and it has happened also. Recently only our North society violated, it happened. K West Ward, Deputy Kotwal ji was there, 4 buildings, 85% consent, but not were violating the laws. One single man doctor, he complained, deputy register with 1 letter, I am calling for inspection of all your societies, all 4, till then don't do anything. 1 simple letter. So it is very important. There are court's orders. People will say it is not mandatory. लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तुम्हारे हित में है, तुम्हारे बेनिफिट में है कि तुम्हारे अगेंस्ट में है. अगर मैंडेटरी नहीं रहेगा तो जो मैनेजिंग कमेटी आए करेगा उसका क्या इलाज. तो इट इज इम्पोर्टेंट. सो मैंडेटरी जनरल बॉडी मीटिंग्स होता है. इवन द PMC अपॉइंटमेंट यू हैव टू हैव शो दीज आर द 3 quotations we have received, and out of that the general body will decide whom to. You can call the all 3 PMs to give their performance or the presentation, and then you decide. That is the first way रहता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी सबका रहता है कि हम PMC का पैसा क्यों भरे, बिल्डर भरेगा. जनरल. तो मैं हमेशा अक्सर पूछता हूँ ये सवाल हर सेशन में कि अगर आपका मैं PMC हूँ और आप बोलेंगे कि बिल्डर मेरी फीस देगा, तो मैं बिल्डर का हुआ कि आपका हुआ. So it has to be embedded कि no, he is our PMC, he is our legal consultant, this is his fees, builder has to pay, but it is from our this contribution or whatever is due to us from you, we will pay. Then that that clarity comes. So appointment of PMC from 3 quotation is a must. Okay, transparency and fairness, this is the key line. ये सब जिस दिन इंप्लीमेंट होगा ये सेशन भी करने का जरूर नहीं है, क्योंकि इफ देयर इज ट्रांसपेरेंसी, यू आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग, तो ये सेशन सुनने की भी जरूर नहीं है आपको. बट दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लम. मेंबर्स कंसेंट रात को भेज देते हैं फॉर्म, ये कंसेंट साइन करके दे दो सुबह. दैट इज नॉट द वे. You should be able to read it,
you should be able to understand it. You can ask 10 people what I am giving in my writing is acceptable or is against me. Developer selection, the most crucial stage is this. कितने प्रोग्राम किया है, कितना past projects है, कितने, जैसा I just mentioned earlier. These are the small things, and today the alarming situation is that we are heading for a concrete jungle. Is builder 4 साल पहले था भाई project लाओ, अभी he has to decide ये project लूँ के नहीं, या तो which project is going to give me most money, I'll decide that. So it is an alarming situation at more. How do you select the builder? Whether a builder may be very good, very capable, very efficient, but everyone has their own limitations. If he is overloaded, then what? ज़्यादा हद से ज़्यादा काम ले लिया वो, तो वो भी क्या करेगा? तो वो सब सोचना जरूरी है. What are the members' rights in terms of during the process of redevelopment is also very important. The timelines and deadlines, as we said. Today we had an agenda made, so I always used to say to myself, if I don't start the program in time, how as a PMC will I ever deliver them on time, the project? So I just told Sunil Sharma ji कि नहीं, हम start करेंगे, we respect everyone's time and we'll follow it, and rest will all come that way. Legal compliance is very must, and the right person to get is a must. So dispute resolution is important, professional guidance is important, and this is the basic 17A guidelines. I just showed you that in today's session, I think almost 35 to 38% are there from the managing committee who are sitting over here, who had registered. Rest are members also. So at least take this message, try to give them information as much as possible, whether it is appointing of PMC or it is an offer from the builder, or if it is a meeting, documented or no. So then only things can move ahead. So next thing is what is there as a part of information. Disruption of banking हो गया UPI से, GPay से. जो एक चेक लेने हम जाते थे खुशी डिपॉजिट करते थे, 2 दिन के बाद पास होता था, आज 1 सेकंड में हो गया. Same thing is happening in the construction industry also. How technology is helping in getting better homes, better construction, and with the speed of time. So there was a session recently on that, how artificial intelligence is also going to help you. Information तो आप Google पे मारेंगे, but once you start using AI also, how fast it goes is to be understood. So the role of artificial intelligence, I'll take 1 minute, but it is very important to see that. Design planning, construction management, site supervision, construction robotics, supply chain management, energy efficient risk management. It is so fast that you can't imagine also. So this is the power of artificial intelligence. People in this session today, some of them or many of them may be aware of it, but this is trending and overtaking. How it can go to disrupt the knowledge industry, the construction industry, how it is going to be helpful, how it is going to be beneficial in terms of getting. As I said, information तो दुनिया भर का है Google पे. Assimilating that knowledge, that information, collaborating, collating it, and then using is the knowledge society we are looking for. So this is, I made going to publish a book, Ashiana, Reviving Mumbai Guide to Self-Development for Housing Society, author Akbar Jiwani. These are the table of contents. But do I have the time to write all these books? No, if I am doing that writing only, then nothing I can do. This is with the help of artificial intelligence. Within no time I make a book and I publish the book, what I want, how I want, what are the inputs and all that. So to tell you, okay, this is the changing world. We have to be just aware of it and get to know. Now I'll come to area statement. So basically I just run through it. What is the FSI? How do the FSI is calculated? Fungible क्या है? रोड के हिसाब से आपको क्या FSI मिलता है? वो अंडरस्टैंडिंग आपको दिया हूं. एडिशनल एरिया इज कैलकुलेटेड कि व्हाट इज योर डिमांड, 25%, 35%, 45%, and what you are eligible and what you want.
So that gives you an area, it gives you the earning statement के जो sellable component आएगा उसका आपकी एरिया में क्या रेट रहेगा, तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग आपको दिया हूं कि इसमें रोड सेटबैक आता है तो आपका नेट प्लॉट छोटा हो जाता है, लेकिन उसका एफएसआई आपको मिलता है। वो मिलने के बाद आपको कितना एरिया है, अगर आपका 3 एफएसआई है, माड़ा का प्लॉट है, उसके बाद 35 फंजिबल एरिया है, okay, and then you get the total area built up. There is a difference built up area and carpet area. So carpet area आप 100 है तो built up area will be 115, 15% more. This is how you have to calculate. So when a builder is negotiating with you, be careful to ask mofa carpet, wall to wall, and not even rera carpet, क्योंकि 480 mofa carpet is equal to 508 rera carpet. So these are the areas for you to understand. एक्सपेंस स्टेटमेंट में देखो कितना वो आता है, प्रीमियम्स हैव टू बी पेड, फंजिबल एफएसआई हैज टू बी पेड, स्क्रूटिनी कॉस्ट, आईओडी कॉस्ट, डेब्रिस कॉस्ट, वेलफेयर कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्जेस, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर कॉस्ट, देन टेनेंट इज रेंट इज ऑल्सो अ कॉस्ट, कॉर्पस पीपल आर आस्क, एंड लास्ट में हमारा पार्टनर जीएसटी. सो दीज आर द एक्सपेंसेस पार्ट. सो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर बिल्डर 1 रुपया डालता है तो मुझे 1 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए. वो समझ के हम चलेंगे तो हमारा माइंड क्लियर होगा कि उसको क्या मिलता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या मिलता है, लेकिन हमें मिलने के लिए उसको मिलना जरूरी है. ओनली इफ इज मेकिंग मनी देन आपको लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्लियर होगा. सो दीज आर द बेसिक एफएसआईज. आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ यू. ओके. So these are the incentive FSIs which I shared with you, and premiums जो है, 1 minute, I'll just go through it. So these are the premium, scrutiny, fungible, development charge, development sales, welfare, everything is there. These are the 3311 which I just explained to you. Okay. So in short, feasibility report, role of PMC, feasibility, fundraising, legal compliance, and this is how it works for him. The construction, this is the last portion. I'll say what is the changes coming in terms of mass construction, which is a change of the hour. If you see this, roads, bridges, metros are made by the bridge is made somewhere else. It is brought over here to the site and it is just assembled. But consistency of the size of the material, and you have to just fix it. So this is what is going on. Low cost home 3D printed in just 5 days. अगर आपको कहाँ पर रो हाउस बनाना है, ground plus 1, 5 days, 7 days your home is made. This is fully 3D printed. एक मशीन लगता है, machine is connected to a laptop. डिजाइन सेट हो गया, कंप्यूटर में डाल दिया, मशीन के थ्रू जाता है. You don't have to do anything, just one person to just monitor and follow. So this is what is happening. But where is it for us? Texas to inaugurate world's first 3D printed hotel, pura, in no time. So this is what is happening. So how about residents? So these are, see, ideas what they are coming. In Japan there is a sink where for washing hands on the toilet itself, so that the same water can be used again in the flush. Japan saves millions of liters of water every day. So these are small things which sustainable living has to reach. क्योंकि आप नवे घर में जाओगे तो आपका मेंटेनेंस बढ़ना है. अभी 1000 रुपया है तो तभी 4000 रुपया होगा. So these are the ways. Solar panels are there, solar light is there. This you have to think. Okay. So recently there were meetings where the new housing policy has been released, the draft, where I happened to attend and gave them, because for self-development they have made a notification in 2019, 13 September, but they are not put to use. Where in self-development you get 10% extra FSI, where the stamp duty is just 1000 rupees, LUC tax is abolished, but वो implement नहीं हुआ है. So I just reinforce that, and it has been mentioned in the new housing policy, which has been just released for suggestion. So moving towards safer homes, as I explained, society, call for a meeting, 51% consent is required, 14 days notice has to be given, 75% people have to attend, 51% have to give consent, and then pass a resolution, pass and appoint a PMC,
make a website so that no one comes to your house, no one calls the chairman secretary for information. Website से आपको सब information मिल जाना चाहिए. And keep the deputy register informed. Keep the deputy register informed what is happening and what is not happening, so that you cannot say that. So this is again just repetition, pre-tendering and no. So this is the whole process. This is just where we happen to speak on redevelopment and giving information, which I do at other sessions also. This is one PMC I am of 53 housing societies. Just imagine, 53 housing societies, 3,488. In 8 months I completed 43 buildings, 10 to go. 97% consent. But the idea is the core committee, I had invited them, I don't know whether they have come or not. Core 11 people, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे members लोग के लिए कुछ करो. And that is how it started. No vested interest. All interest to them. And these are 53 societies, all in one cluster, and the same response I got from all societies, all the buildings. I personally called for each building meetings and did it. So, काम करने में भी मजा आता है. So when that is there, such transparency is there, information is there, knowledge is given out, सवाल जवाब सबके हम आंसर करते हैं. So that is how it is going to go ahead. This is what is required. These are the 40 buildings which already completed, 53 to be done. These are the other projects which I am doing, which are SRA and all that, where as a PMC I am handling them. So networking, I am from Bandra since 1969. I stay at Bandstand and doing lot for Bandra itself with Ashish Silarji in terms of helping out the societies, getting funds from his MLA funds and doing society roads and all that. So it is my passion as a social network, because I am a trained volunteer in disaster management and firefighting also during. These are the CI World Construction Awards where Mr. Darekar was there. I am also as a convener of Ward 101 as convener of Mumbai Jilla District Federation for any help, any suggestion and all that is there. This is the cell which we have made who is promoting such programs. This is one SRA project because my family history is also construction. Sorry for the mic. So small projects I also do on my own, but my focus is more as a PMC to do and spread the word of happy homes to everyone. So I think Prima, this already we saw, as a Builders Association of India is there, where they are doing underwater sewage pipelines are being governed underwater. So infrastructure also has to grow, and especially like Malwani, Kandivali area, in the cabinet it has been approved to develop on the lines of BKC. So I think I have taken much of your time, and this is in brief I wanted to say. Bandra is there, I am in Bandra. If there is anything, CRZ was there, CRZ is now no more, and we will just go ahead, and I think rest is all the same. अकबर भाई के लिए ही यही लाइन है. 2002 के पहले धीरू भाई अंबानी साहब थे, उन्होंने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में. रिलायंस मोबाइल चालू किया था साहब, आपको याद होगा. तो आज आपको पूरी दुनिया दिखा दी इन्होंने लगभग. तो जोरदार तालियों से स्वागत करें.